Okay, students, welcome again. And we left here for the discussion statically intermediate soft. So, इस सॉफ्ट में और previous soft में what is the different? The main basic difference is in previous soft which is fixed is one side, but this soft is fixed on the both side. Okay. बोथ साइड से आपका बीम फिक्स है और फिक्स होने के बाद क्या है कि इन बिटवीन मिड पॉइंट पे हमें टॉर्क, ठीक है ना। अभी फिक्स सपोर्ट होने की वजह से क्या है, जिधर भी आपका फिक्स सपोर्ट रहेगा वो आपको रजिस्ट करेगा और दिस पर्टिकुलर टार्क। ओके, ये जो टार्क है उसके लिए ये आपको अपोज करेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे आपका फिक्स एंड है। ठीक है। अपोज करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी टार्क अप्लाई होगा उसका इक्वल एंड अपोजिट टार्क आपको पर्टिकुलर सपोर्ट्स पे जनरेट हो जाएगा। ठीक है ना। दो पार्ट्स में यहाँ पे देखिए फ्री बॉडी डायग्राम में टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। ये आपका AC, AC एंड CB। ठीक ना। Given the soft dimension and the applied torque, we would like to find the torque reaction at A and B। मीन्स A और B पे हमको टार्क रिएक्शन फाइंड आउट करना है। ओके। तो अभी क्यों रिएक्शन कहाँ पे आएगी? जहाँ पे सपोर्ट रहेगा। सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट है, दोनों ए और बी दो बोथ प्लेस पे देयर इज फिक्स सपोर्ट। तो फिक्स सपोर्ट है तो इसकी वजह से यहाँ पे हमारा जो भी टार्क अप्लाई रहेगा उसका क्या कहते हैं कि जो भी टार्क रहेगा उसके लिए आपका रिएक्शन प्रोड्यूस होगा। ठीक है ना। अभी रिएक्शन प्रोड्यूस होगा तो फिर क्या होगा कि फ्रॉम द फ्री बॉडी डायग्राम एनालिसिस ऑफ द सॉफ्ट, तो आपका जो भी टार्क, ये भी जितना भी ये टार्क अप्लाई है वो टार्क क्या है, इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों टार्क, जितना भी टार्क प्रोड्यूस होगा वो इसके इक्विवेलेंट होगा। किसके? आपके 90 एलबी फिट, मतलब 90 पाउंड फिट। तो जैसे आपका न्यूटन मीटर है तो सेम पाउंड और फिट क्या कहते हैं कि आपका यूनिट है फॉर द टास्क। मीन्स पाउंड आपका जो है वो फोर्स की यूनिट है और फिट आपका लेंथ की यूनिट है। ओके। विच इज नॉट सफिशिएंट टू फाइंड द इन टास्क। द प्रॉब्लम इज स्टैटिकली इंटरमीडिएट। स्टैटिकली इंटरमीडिएट है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? डिवाइड द सॉफ्ट इनटू टू कंपोनेंट व्हिच मस्ट हैव कंपैटिबल डिफॉर्मेशन। ठीक है। जैसे ये है फाइव इक्वल टू फाइव वन प्लस फाइव टू, तो TA L1 JG माइनस TBL2 J2 G। देखिए जी कॉमन है आपका। ठीक है ना, क्योंकि एक ही मटेरियल है। अभी एक में ही मटेरियल है इसलिए जी कॉमन है। तो टीबी क्या है यहाँ पे? टीबी का फॉर्मूला यहाँ से L1 J2 L2 J1 टी। तो टी एंड टीवी में ये रिलेशनशिप है। ठीक है ना। तो अभी ये रिलेशनशिप सब्स्टिट्यूट इनटू द ओरिजिनल इक्वेशन। ठीक है ना। तो अभी ये जो टी ए और टी बी है, यहाँ पे टी ए और टी बी है ना, तो हमने क्या किया कि टी ए और टी बी की वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है ना। टी ए और टी बी की वैल्यू पुट कर दिया। यहाँ पे टी है और यहाँ पे हमने टी बी की जगह टी ए की वैल्यू पुट कर दिया।
तो जैसे ही टी ए की जगह टी बी की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या है, जी टू से जी टू कैंसिल हो जाएगा है, एल टू से एल टू कैंसिल हो जाएगा। ओके, और क्या बचेगा आपका, सिर्फ ये वैल्यू पुट हो जाएगी, टी ए प्लस एल वन जे टू टी ए एल टू जे वन। तो ये आपकी वैल्यू पुट हो जाएगी, और ये किसकी इक्वल है, दिस इज 90 पाउंड फिट। सो तो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे जो कि बेस्ड ऑन दिस, जस्ट 1 मिनट। Okay, so now we're going to discuss this problem number two, where one side a gearbox is there. See, there is a gearbox, means this is a fix, and D is a totally fix, and here is also a fixed bearing is there. So, two solid steel shafts are connected by a gears. Knowing that for each shaft G is common, 11.2 into 10 to the power 6 psi, and that the allowable shear stress is 8 ksi. Okay, so don't hesitate about the unit. Okay, maybe this unit is from the different book. This question is selected from different book which is used in the European country. That's why this unit is changed. Okay, so here is the Pascal and here is the Pascal also. Okay, so determine the largest task T naught that may be applied to the end of the shaft AB. B. The corresponding angle through which end A of the shaft AB rotate. So let's see what is the procedure for that. So what is the solution method regarding this? Okay, so first what we can do, apply a static equilibrium analysis of two shafts to find out the relationship between TCD and T theta. TCD and T, no, T naught means we can say that this is the initial torque. Okay, so if there is a initial torque, then what we can do, we just do applying the static equilibrium conditions. So what is the static equilibrium condition? Apply a kinematic analysis to release the angular rotation of the gear. Okay, now find the maximum allowable torque
On each soft, choose the smallest one. Okay. Find the corresponding angle of twist for each soft and the net angular rotation of end A. Okay, these are the things. So we go through these methods to find out the solution of given problem. To find out the solution for the given problem. Okay, so let's start to solve problem. Here solution is there. Apply a static equilibrium analysis on the two soft to find out the relationship between TCD and T naught. Okay, so this is TCD. Here see C and D. So whatever the torque produced in this soft, this is TCD. Okay, see here RC equal to 2.45 inch and RB equal to 0.875 inch. ओके, सो यहाँ पे स्टूडेंट्स इंच में गिवन है और जो वैल्यू हमको जो यूनिट दिया है that is also belongs to the inch, so there is no need to convert these inches in the meter. Sorry. So this is the free body diagram for gear B and C. Sigma m is equal to 0. This is the equilibrium condition. F into 0.875 inch minus T naught and FC also equal to 0, that is the F 2.45 inch minus TCD. So here we can see both are the 0, both are the 0 means MB equal to MC. So we evaluate both the things and find out the solution. So from this equation TCD equal to TCD equal to F 2.45 inch. Okay. And from here, what is the value of F? From here, the value of F is T naught divided by 0.875 inch. So we put the value of just 1 minute, just 1 minute.
Now, what I'm talking about, I just show you. So here, from this equation, what we get? F equal to T naught divided by 0.875. Okay. I know from this equation we get TCD equal to F 2.45. ओके, तो अभी यहाँ से जो f की वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट करते हैं। f इक्वल टू टी नॉट डिवाइड बाई 0.875। टी सी डी इक्वल टू f की जगह क्या लिखेंगे? टी नॉट डिवाइडेड बाई 0.875 into 2.75 45। ओके, तो अभी इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमको क्या वैल्यू गेन होगी? जस्ट ट्राई योरसेल्फ what we value get, which value we get to after solving this. 2.45 divided by 0.875, that is 2.8. So this is the 2.8 t. Now you got this. Now you understand how we got this value. Now apply a kinematic analysis. This is the static equilibrium analysis, and now we apply the kinematic equilibrium condition. So here now RC is given 2.75 inch and RV is given 0.875 inch. Okay, and theta C and theta B. So RV theta B into RC theta C. This is the equation for the radius and twist angle. Okay, so from here phi B equal to RC divided by RB into phi C. Okay, so we put the value RC and RB. So what we get here? Because this here same thing is 2.45 divided by 0.875, that is the 2.8, and we get the 2.8 phi C. Okay, so this is the relationship between the sorry, between the twist angle of gear C and gear B. Okay, so here we get the relationship in the twist angle of gear B and gear C, and here torque of gear C and gear B. Okay, now
Find out the T naught for the maximum allowable torque on each shaft. ठीक है, तो ये टार्क आपको गिवन है. नाउ वी डिस्कस अबाउट द फ्री बॉडी डायग्राम. दिस इज 24 इंच लॉन्ग. So tau max is TAB and tau AB. So तो यहाँ पे टी नॉट टी ए बी हमको फाइंड आउट करना है. और सी की वैल्यू कितनी है? 0.375 इंच and pi by 4 0.375 to power 4. This is the value of 4. Now we know the value of tau naught, tau initial, and from this we easily find out the torque of this layer, because there is a relationship between that. Okay, so tau max TCD TCD, and now put the value 2.8 T, because CD, what is, how much it is given. Now from here, see, initial torque we get here from the tau max, here, and from here. So there is a difference between tau naught here and tau naught here. Okay, because the value is changed. Now what we going to tell? Because this tau naught is belongs to the CD, and this tau naught belongs to the this BA. So okay, that's why the value is changed. Now we can easily see here phi AB means the twist angle in the phi AB. Okay, so what is that? TABL GABG. So value putting here TAB, see, TAB, sorry. So 24 inch pi 0.375 to power 4 into 11.2 into 10 to power 6 PSI. Now we get the value in radian, and how we convert this radian into the degree. So there is a formula. If radian is there, okay, RAD, called the radian, okay, and we want to in degree, means like that. So that is whatever the value in radian is given, we just multiply by the 180 and divide by pi. ठीक है, 180 और पाई से डिवाइड कर देंगे तो हमको ये वैल्यू गेन हो जाएगी. आप कैलकुलेट कर सकते हैं. So what is the value of pi? You know. So just check this value. Is this okay? So the value is point 0.387 into 180. Okay, divide by pi.
Okay, so that is 22 point. So the value is 22.2. Okay, so there is a mistake. This is 22.2. The point should be here. Okay, 22.2 degree. Okay, now what we see here, sorry, for 5 CD, same calculation is there, that is point 514. So same things is repeated. I just calculated once more. Okay, the value is now point 0.5, 5.4. So that is the correct 29.5. The point should be here. This is wrong. Okay. So there is a correction. This is 29.5 and this is 22.2. Let's when we find out if this solution is right or not. Just I check the calculation because there is a problem in the calculation. Okay, so okay, 561 into 24. Okay, in, okay, divide by 0.375, divide by 0.375, divide by 0.375. One more time, divide by 0.375 and now divide by 1 11.2 and divide by 1 1 2 3 4 5 and 6. Okay, what is the value? Okay, one more thing is left. Divide by how much? 5. Okay. Okay, this is the wrong. Okay, this is the wrong. That's why they calculate these same things, but the calculation is wrong. This is not 0.387. The value is 0.0387. That's why we get the wrong answer in calculation.
This is not. This is the correct answer. Okay, because they take mistake here. That's why this value will be wrong. This value is wrong value. This is the correct value. What is 0.0387 is the correct value. Okay. Similarly, here done the done the wrong things here, and the correct I will correct it here. The decimal point is here, so that this answer is correct. Okay, because the twist of angle is much higher. 29.5 is the very big value for the angle of twist. So that's why this value is correct and this calculation is wrong. The point should be here, not here. So we get the right answer. Now see, 5b is 2.8. This value is here 2.8 pi c. So 2.8 into 2.95, this value 8.26. And now phi a is the combination of these two. So 8.26 plus 2.22. So we get that overall total value twisting angle of A, that is the 10.48 degree. This is the correct answer. Okay, because I took this value from a book, that's why there is a maybe printing mistake. That's why this answer is correct, but this calculation is there is a mistake. This is 0.0387 and this is 0.051 radian. Okay, now these things, design of transmission soft. Okay, so design of transmission soft I will start in next lecture. So if you have any doubt, then